Vice Chairman Analog Group, Shri Kalyan Chakrabarti ji, CEO MR India, bringing over 3 decades of global leadership experience across real estate, finance and business operations in India, the UK, the US and Europe. Prior to MR India, he held leadership positions with renowned organizations including Piramal Group, Edelweiss, GE Capital and Genpact. Known for his strategic vision and operational expertise, he is currently leading MR India's growth and expansion across real estate markets in the country. श्री कल्याण चक्रवर्ती जी के लिए जोरदार तालियां मंच तक पहुंचाएं. श्री विराज सागर दास जी, प्रेसिडेंट BBD Group, one of Uttar Pradesh leading conglomerates with a strong presence across education, real estate, healthcare, hospitality and infrastructure. Under his leadership, the group has continued to contribute significantly towards the state's urban and institutional development landscape. He is widely recognized for driving innovation-led growth and strengthening the group's legacy of excellence and community impact. Welcome, sir. Mr. Rajiv Asopa, Director, Nimbus Realty. Rajiv Asopa is the director of Nimbus Realty, a leading real estate developer known for delivering integrated residential and commercial developments across North India. With extensive experience in real estate strategy, project execution and business development, he has played a significant role in strengthening the company's growth and market presence. Under his leadership, Nimbus Realty continues to focus on quality-driven development, customer and sustainability, urban growth. तो मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों से हमारे इस पैनल का स्वागत करें. And I request Mr. Santosh Kumar ji, Vice Chairman Analog Group, to please moderate this panel discussion, affordable to aspirational, addressing the housing needs for Uttar Pradesh. Thank you. Good afternoon. Many leaders since morning on UP, the proactiveness of the government, the governance, and also the progress on the real estate development. A very interesting session we had with Mr. Awasthi ji. Looking at his energy, the future outlook. Definitely we believe that the UP will, by 2030, will definitely cross the $1 trillion economy. This is the session which is going to be moderated by me on a topic which is affordable to aspirational, addressing the housing need of the Uttar Pradesh. सुबह से सब लोगों ने सुना कि किस तरीके से यूपी ग्रो कर रही है, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आई है, किस तरीके का स्केल है, किस तरीके का इनकम बढ़ती जा रही है, इन्वेस्टमेंट किस तरीके की आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग को किस तरीके से एनकरेजमेंट मिल रही है. We heard from various speakers about the development which is taking place in UP. On the real estate side, today the discussion is not about owning the house. Today the discussion has become, especially in cities like Lucknow, कि भाई कैसे मेरी लाइफस्टाइल बढ़ती जाएगी, कैसे जो एस्पिरेशनल यंग पॉपुलेशन जो है आज, they are not thinking only about owning the house. They are thinking about how can, as a developer, upgrade the lifestyle, how the livability can improve, how can the trust of the customers can be enhanced by the developers, and how can we create a future-ready cities. We also heard from many of the speakers, how many of the tier 2 cities within UP as growing. Everyone spoke about Lucknow, Noida, Kanpur, Varanasi, Prayagraj. These are becoming growing cities, aspirational cities, and the question everybody is asking is,
Is the developer trustworthy? Will the project gets delivered on time? Does the city offer mobility and infrastructure? These are some of the things which, everybody's mind, everybody wants to have the answers on these questions. On that, we have got a very strong panel, very well known developers. Kalyan runs one of the India's largest development company, which is also the first FDI which is coming around 10 years back, $1 billion, 20 years back, $1 billion investment, and they were the first one to enter into UP. Second, your own BBD group, they have known for creating educational institution, and later on they diversified into real estate. And we have got Rajiv ji, one of the largest developers from Noida, from Nirala Estate. They have developed many real estate development in Noida and surrounding regions. So my first question to Kalyan, you are the first one to enter the UP, considering around 20 years back. Am I right? When you entered, when you made this decision around 20 years back, what was it going on in your mind at that moment, considering the environment at that moment and the environment which you currently have? So I'll have to just speculate, because 20 years ago I was not there with MR. Having said that, I think the promise has changed. In the sense, 20 years ago, of course, you came with the hope that Tier 2s will deliver, Tier 3s will deliver. Lucknow very clearly is one of the largest markets, identified and had a lot of promise for several decades now. The promise to delivery has been a little weak, is what I would put, in the initial 10 years of 20 and the last 5, the later 10 years of the last 20. So the first 10 versus the last 10. I'm more privy to the last 10. I've been a frequent visitor. I've been noticing what is going on here from governance perspective, growth perspective, vision perspective. We also heard earlier Avasthi sir also talking about some of those things. I'll give you a small example, Santosh. Last time I came for a UP Credai conference of a similar sort about 2 years ago. Yeah. And I am a firm believer that infrastructure, particularly roads, unleash growth opportunities, and they are the big equalizers across the world, proven over centuries. US took it upon about 120, 130 years ago, and all the highways got constructed. UK took it up about the similar time. So if you look at the Western world, about 100, 150 years ago, most of them started building these big, massive highways. And that was a huge growth propeller. India struggled for a very long time. Golden Quadrilateral, when you and I were probably in our early 20s, is when it started. And that unleashed the first phase of effective growth and things moving faster and friction coming down in transaction making. 2 years ago, when I came for this Kradai event, I did Google about the state highways, because wherever I go, I normally do it. So, and there, it was 5 highways, right, with 5th one to be yet to be inaugurated, but 5 highways, state highways, massive scale, and I was very excited. So today I asked Google, how many highways are there in, and this is Gemini actually. Google has now become one level better. There is artificial association of intelligence with Google now. So when I looked at it, it said 7. And then I opened Analog, it says there is 9. And there is 2 more to be inaugurated, 11. Which essentially tells you one thing, that even Google is unable to catch up with the pace that Lucknow is delivering. Very good. That is the difference in the last 10 years versus the previous 10 years. So there is a lot of slow building up on the potential of the city or the potential of the state. But I think the last 10 years or maybe the last 5 years more so, the delivery is visible. We are excited. We have got a young, dynamic, Sushil also is sitting here, who has been leading the show for the last 4 years with us. And we have hit numbers which we have never hit. Whatever we launch,
whatever is our anticipation, we deliver much faster than that. Whether it is on price, volumes, pace of approvals, I think the smoothness which has come in the regulatory environment, predictability on the governance side, it's one of the easier states to work in. I think that is the softer aspect of UP and Lucknow, which has made all the difference. And that is where I am distinguishing the previous 10 with the current 10. I don't know whether I answered your question. No, you answered me. One was definitely on the delivery side because of the improvement on the infrastructure, and also now the environment has improved a lot on the governance side as well. But again, Kalyan, you did not go to Noida, which was, at that moment, which was growing and which had the larger potential as compared to Lucknow. But you decided to go to Lucknow first. So, any specific reason? I think it's a choice of strategy which was made at that point in time. Noida land is not available on an outright purchase basis, so you are never the title owner. As an FDI entity, one tends to have its own set of strategic choices and hesitations. You do want to own the land and control your own destiny. When you are owning the land, delays hurt you slightly less. And in the Indian context, the land valuations keep appreciating. So it's a land banking strategy which we adopted about 20 years ago. That is the reason we brought about $1.85 billion of FDI into the country. And for last 20 years, each year, just to add to your introduction, MR has been the highest FDI contributor in the real estate space on a cumulative basis, continuously. Right? So that was a strategic choice. I think the strategic choice with respect to Tier 2, it's not only in Lucknow. We did adopt a similar strategy in Indore, similar strategy in Jaipur, similar strategy in Mohali. So there are multiple different cities. Kerala, we have done some, where Tier 2 and Tier 3, the belief that growth is potential to improve or potential to grow in these Tier 2 and Tier 3 is very high, is a belief which was the leadership at that point in time took. And I think in the last 7-8 years, particularly post-pandemic, technology has become a great leveler. You can sit anywhere and work. We are currently seeing a huge spate of growth in the Tier 2 and Tier 3 cities. The desire for young children to go back to their own cities and work. Unlike our generation, where we all migrated from smaller villages to Tier 1 cities in search of livelihood, and we settled. So I know, come from a small village in Karnataka. I come from a small village of 50 people in Odisha. But we tend to now, our primary home is the metro city. It's no more our primary home. My primary home is no more Odisha. And that reality is fortunately changing. I am not exactly 100% proud of that reality. I think the new reality, which is leading to Tier 2 and Tier 3 growth, is driven by the fact that the aspiration is to stay closer to the home. Aspiration is to stay closer to the roots. That's good for us also. As a businessman, when that aspiration starts shifting back, we start getting better business opportunities. So some of the bets which were taken with the hope that this thing is going to happen is getting realized today. And Kalyan, any plans to go into any other cities of UP? Yeah, Noida continues to be exciting us, so we keep looking at deals in Noida. The only thing with Noida is you cannot be doing land banking. You sign the deal, you need to start delivering a year from there, right? The land prices across the country practically, and maybe more specifically since we are talking about UP, are shooting through the roof. Last 3-4 years, we have seen land prices going up anywhere between 3 to 5 times, depending on the location that you are talking about. And hence, the lead time to taking the land and launching and ability to hold it on the balance sheet has come down. You cannot hold it too long in the balance sheet if you have acquired at fair market value to launch it. But yes, we have looked at, in fact, a couple of deals in Ayodhya as well. It did not work out. So the openness to be everywhere is there. But in real estate, there are always lots of slips between the cup and the lip when you look at a deal. Typically about 5 to 7% of deals only get consummated. Viraj, you are a local player and you have developed a very large township within the city limit of Lucknow. And also you come with a strong family educationist background as well. My question on the transformation of
city as well as the UP as a state, Lucknow today feels very different from what it was decade ago. And what, in your opinion, has fundamentally changed in the city's economic and social fabric that is now driving the stronger residential demand? First of all, thank you for having me here, sir. So one of the major things which I feel which has happened in the last 10 years, it is what we've heard today is also that is a massive push from the government. The double engine ki sarkar, the push from our Honorable Chief Minister, the sort of progress we've seen in Lucknow. Right now, Lucknow has major expressways going through it. Right now, Lucknow is connected to the easternmost part of the state, to the westernmost part of the state, to the northernmost part of the state, and to the southernmost part of the state. Because of this huge development and the sense of security, stability, and policing which we've seen in the last 10 years, a lot of investment has come to the city. So me being from an education background, today BBD University has more than 25,000 students with us. 10 years back, we were having approximately 16 to 17,000 students. So we have ourselves, roughly, it is increased 1.5 times. Then we have newer universities coming to the city, like Chandigarh University. They are much newer, the older colleges converting into universities like SRS. Plus, there are a lot of hospitality hotels coming to the city, like we have Max here, Apollo here, we have now Fortis, which is coming up in Ikana. So, what we are seeing is major education and medical investment in Lucknow, and when these investments happen in Lucknow, we see a lot of young professionals coming back to the city. We see, as sir said, there's a lot of aspirational migration which is happening to the city, which our young professionals were living in metros, which are coming back to their own town, Lucknow, because they want to be closer to their home state. And this is leading to a great rise in residential housing. Earlier, traditionally our housing was majorly governed by government employees or semi-government employees, which focus on ownership. Today, these young professionals are focusing on lifestyle choices. So they want 15-minute living cities where they want to walk to their local retail, they want to walk to their local schools. So that is why we see a lot of integrated townships which are coming up in Lucknow, which are really delivering in Lucknow. We see mostly the price rise has been happening in the integrated townships, we have seen a great rise in Ansal. We have seen a great rise in Shalimar One World. In our own township, BBD Green City, we have seen a great rise. So I think going forward, because Lucknow has that availability of land and government has been investing a lot on the infrastructure around the city, whether it is the Kisan Path or forthcoming Vigyan Path, we can have huge developments in Lucknow where all private builders can come together and build a lifestyle change, an ecosystem, an environment where people of today's generation can see a future living in a future community. And you touched upon, migrating population, because many of the people who are coming into Lucknow, primarily because of education or for any other related industries, they would like to work on that. When they are moving in, they definitely believe that now today Lucknow is becoming very congested. There is a traffic, huge amount of traffic, and especially those people who are coming into Lucknow, especially from educational, aspirational students, for example, they have the aspiration to have a very good lifestyle, and also they would like to have a very good after their education, what they would like to do. How are developers in Lucknow balancing this demand for aspiration within the city's traditional character and cultural identity? I think very rightly pointed out by you that today the young professionals and the home buyers, they want a lot of aspirational living, they want a lifestyle changes. That is a huge task and a huge learning sphere for us developers, but it also opens a lot of opportunities for us. I feel traditionally
we were building homes, and today we are providing experiences to our customers. From a traditional construction industry, we have moved to somewhat a service industry where we have to provide our customers with proper lifestyles, and our job doesn't only end by just giving them houses. Our job continues because we as a local builder are here in the city and we are going to remain here, and my generations are also going to be here. So we want to create something which lasts forever. Also, I think that right now we need to build communities where we are focusing on the future. Yeah. तो राजीव जी, आपने जो है सबसे ज़्यादा फोकस जो है नोएडा मार्केट में किया है, एंड यू डेवलप्ड लार्ज डेवलपमेंट ऑन द अफोर्डेबल साइड एंड नाउ ऑन द मिड सेगमेंट साइज. एंड अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से अफोर्डेबिलिटी का डिमांड जो है सबसे ज़्यादा कम हो गई है. हमारा भी स्टडी कहती है करीब 20% की करीब जो है डिमांड फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग हैज़ गॉन डाउन बिकॉज नन ऑफ द डेवलपर्स आर डेवलपिंग अफोर्डेबल हाउस पर से. इन दैट सेगमेंट हाउ आर यू बैलेंसिंग कि अफोर्डेबल भी और आपका मिड सेगमेंट भी जिसकी आज सबसे ज़्यादा डिमांड है, तो दोनों को कैसे बैलेंस करते हैं आप लोग? हमने निम्बस ने ऑलमोस्ट 9 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया पिछले 10 इयर्स में डिलीवर किया है. और नाउ द लैंड रेट्स आर इंक्रीजिंगली वेरी फास्ट. पिछले 3 साल में नोएडा का लैंड का रेट 3-fold इंक्रीज हुआ. तो इस वजह से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और प्लस लैंड कॉस्ट होने से जो यूनिट का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया. तो हमने जो 9 मिलियन बनाया और उसको डिलीवर किया वो सारा अफोर्डेबल था, और ऑलमोस्ट वो 3000 पर स्क्वायर फीट 4000 पर स्क्वायर फीट का डिलीवर किया. तो उसमें लोग अफोर्डेबल हाउसिंग लिए. लेकिन अब कंपल्सरीली लोग अब मिड सेगमेंट वाले ही नोएडा में आ रहे हैं, लेकिन अफोर्डेबल की भी डिमांड है. तो अफोर्डेबल के लिए हमने अब यमुना एक्सप्रेसवे पे अभी लैंड उस रेंज में नहीं है, तो अब हमने फोकस किया यमुना अथॉरिटी पे, यमुना डेवलपमेंट एरिया में. अब जो लोग अफोर्डेबल हाउसिंग लेना चाहते हैं उनको यमुना एरिया में जाना पड़ेगा. नोएडा अब आउट ऑफ रीच है उनके लिए, क्योंकि नोएडा में अब रेंज ऑलमोस्ट जो पॉकेट साइज है वो बहुत हाई हो चुका है, क्योंकि 3 करोड़ से नीचे का कोई भी शायद अवेलेबल नहीं होगा वहाँ पे. ये मैं आपको बहुत लोएस्ट रेट बता रहा हूँ, वहाँ से स्टार्ट है और शायद 35 करोड़ तक है. तो नोएडा तो आउट ऑफ रीच है अफोर्डेबल के लिए. और अफोर्डेबल अब यमुना अथॉरिटी में अवेलेबल है और वहाँ हम भी बना रहे हैं. हमने स्टार्ट किया था पिछले ईयर 4500 रुपये से और आज वो 9000 हम बेच रहे हैं. लेकिन आज की डेट में 1 करोड़ रुपीज़ का फ्लैट अफोर्डेबल माना जाता है. अब इससे भी लोग अफोर्डेबल चाहते हैं तो उनको फिर बी ग्रेड सिटी में जाना पड़ेगा. मीन्स अब गवर्नमेंट भी इस पे ध्यान दे रही है. जैसे अब कोई दिल्ली में काम कर रहा है तो उसको आना है मेरठ से, तो अब मेरठ से दिल्ली पहुंचने में 1 आवर लगते हैं. तो वो मेरठ में ही अब डेवलपमेंट होना शुरू हो गया. अब मेरठ में अफोर्डेबल रेट में यूनिट्स मिल रहे हैं, तो लोग वहीं लेंगे और वहाँ से टू एंड फ्रो करेंगे. तो नोएडा अब नाउ डेज नोएडा बिकम ए वेरी मतलब आप लगा लो कि गुड़गांव के से भी हाई रेंज में पहुंच चुका है. क्योंकि अब गुड़गांव, चूँकि नोएडा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत हाई है. पहले नोएडा में नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी में
जो गवर्नमेंट जो अथॉरिटी का फोकस है कि पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, रोड्स डेवलप करते हैं, तब फिर डेवलपर आता है, तब वो अपनी प्रोजेक्ट्स को डेवलप करता है। और आप विज़ आप यदि वहाँ जाएं गुड़गांव की साइड, तो गुड़गांव में रेट बहुत हाई थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं था। अब वो सारा शिफ्ट हो गया नोएडा पे। तो नोएडा में अफोर्डेबल हाउसिंग का शिफ्ट हो गया मिड सेगमेंट एंड वेरी लग्जरी सेगमेंट पे। तो अब वो वही क्यों हुआ? क्योंकि मोस्ट ऑफ दी बड़ी बड़ी जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं और जो टेक्नोक्रेट्स हैं, वो सारे अब इस साइड बिजनेस हब्स बन गए और इंडस्ट्री आ गई। तो वो जितने भी लोग हैं उनको अब मतलब लग्जरी चाहिए, तो वो लग्जरी अवेलेबल है नोएडा में और कंपल्सन भी है। चूँकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हाई है, तो बट नेचुरल है कि बिल्डर करेगा क्या, क्योंकि जब इतना हाई रेंज की लैंड उसको लेनी पड़ेगी तो उसको लग्जरी ही बनाना पड़ेगा। हाई रेट की के एफएसआई लेके उस पर आप अफोर्डेबल बनाना इज़ नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि उसमें आप अर्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको लेने वाला कौन होगा अफोर्डेबल, वो नहीं लेगा। तो उस पर आपकी कंपल्सन है कि आप जो हाई रेंज की लैंड है उस पर आपको लग्जरी सेगमेंट में जाना ही पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हो कि राजीव जी कि जैसे जैसे सिटी ग्रो किया वैसे वैसे लैंड के प्राइस बढ़ गया। हाँ। प्राइस के बढ़ने की वजह से जो है एफोर्डेबल हाउस जो मिलती थी वो ज़्यादा दूर चली गई, बट वो भी आज के दिन में पॉसिबल है बिकॉज द कनेक्टिविटी जो है Correct. ज़्यादा बेहतर बन गई है। तो ऐसे एफोर्डेबल हाउसेस जो है आपकी सिटी की पेरिफेरियल में मिलने लगी है। तो डेवलपर जो है ज़्यादातर फोकस जो है वहाँ कर रहे हैं जहाँ पे लैंड की अवेलेबिलिटी जो है कम प्राइस में मिल रही हो एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी वहाँ पे ज़्यादातर कम हो सकती है। तो वो डेवलपर जिनको अफोर्डेबल बनाना है, अब उनको कंसंट्रेट करना पड़ेगा उन पेरिफेरल एरिया में। समझ गया। कल्याण, you know, many of the cities, what we have seen, there is still a delay in, you know, completing the project, which has really escalated the cost, and because of which the entire cost of the project has gone up. That's what we need. So, what as a regulator, especially from the RERA perspective, what in your thought process the RERA should be doing so that developers should not get penalized because of some of the delays from the authorities? I don't know whether I should be asking regulator to do something to save me, to be honest. I think the best place to save ourselves is ourselves. You know, we do not plan right, we jump into situations where we put ourselves in trouble. I'm sorry to be talking like this, and probably there are some developers who won't like this. We spend enormous amount of time before the launch to make sure that things don't go wrong. Many a times I think we rush into situations because we want to take advantage of a particular market बहुत hot है, चलो launch कर देते हैं, बाद में देखते हैं. So I think the unthought through process, many a times, for example, we as a developer don't launch anything unless the last GFC, good for construction drawings, are available for the final floor. 40 मंजिल का अगर इमारत है, 40वीं मंजिल का अगर आपके पास GFC drawing नहीं है तो launch मत करो. Many a times I see in Gurgaon also, the big developers even, they change the drawing as they go along. They change the design as they go along. The RERA has given you a framework. There is no non-transparency about that framework. RERA says you cannot change any structural thing unless you have got the consent. Now if you want to find workarounds after having launched, you think that you will somehow manage, and later on you are struggling to manage, and then you say sir मेरे को मदद कर दो क्योंकि मेरे से गलती हो गई थी, मैंने आपको बताया नहीं था. That is, I think, a wrong principle. It is better that when India is growing large and we are becoming what we are becoming, this state is becoming $1 trillion economy, India is becoming a $5 trillion economy, we are wanting to become a Vikashit Bharat, we should also start behaving like one. I don't see developers running in the first world, and I have worked in first world a bit, running to the regulator seeking help every time. It's the capitalism which dictates the outcome. You are good enough, you deliver, you get out of with your profitability and your skin still intact. You are not, you lose your shirt and pant.
So I think let capitalism and profit motive and the right thing to do take care of it. I have a slightly different or additional perspective also is related to karma, right? We have got two conflicting philosophies in India. One is Bhagavad Gita, which says nishkama karma, right? You work hard without expecting phal ka asha mat karo kind of philosophy. Brilliant philosophy. I think all of us stay detached, work hard, we are not looking at that. The other one is karma. He says, ki boss, if you do good work, you will get good outcomes. You do bad work, you will get bad outcomes. Fortunately, because of RERA and customer activism and law and order in case of UP and all of that, and technology, AI or whatever, transparency, visibility and all of that stuff, the karmic cycles have shortened. Earlier you could make a mistake, 20 years later law will catch up with you. Now you do a mistake, 2 years later law will catch up with you. Sometimes it will catch up immediately. Social media, customer activism and all of that stuff. Expecting the regulator to help me is effectively artificially trying to elongate that karmic cycle. जो 2 साल में justice आने वाली है, मैं बोल रहा हूँ रेरा आप घुसो, मेरे को मदद करो, ये 2 को 20 कर दो. ये होने वाला नहीं है. We should all try and all accept the reality that we are heading to a situation where we will be held accountable. And all these regulators and all have come because of us. They did not, if we were nice from beginning, if we are following our corporate dharma of doing whatever is right, we would not have been in this place. So I normally never go back to regulators asking for something. But most often I find they are doing a good job. I don't want to go to them. Yes, clarity. If I were to generally go and ask in Gurgaon RERA, for example, I'll say, sir, carpet area ka definition ठीक कर दो. ठीक कर दो in the sense clarity ले आओ. Otherwise, there is always a dispute possibility between my customer and me because I measure carpet in a particular way, he measures carpet in a different way, and then both of us come to you later because that clarity which could have been on day one is not there. Maharashtra RERA has got clear clarity on that one. Those kind of, I think, policy convergence, because in different parts of India, different regulators are operating differently. Can the regulators talk to each other in order to come up with more resemblances and more commonalities and get it better? Yes. But to help us cover our gaps, no. So you're saying, I think developer has to work within the framework of the RERA guidelines. One step better. Just like in cricket, you are on a line, you are not a no ball, you are a no ball only when you cross the line. Cross the line. Developers, if you touch the line, you should consider it as a no ball. And hence stay behind the line. पीछे से फेंको बॉल को तो नो बॉल होने का चांस ही नहीं रहेगा. And also, Kalyan, you have the visibility across multiple cities of Indian market. Where do you believe Lucknow stand today compared to other emerging growth cities in India in terms of long-term potential, quality of demand, infrastructure readiness, and investors' confidence? I think it scores pretty high in all of those parameters, and with a little bit of a bias, which in response to your first question, I already mentioned the last 10 years, and Viraj mentioned about security and safety situation, law and order situation, and that has been a huge positive with respect to the investor confidence and end user confidence as well. I think amongst the top, in my opinion, top 20 or 30 tier 2, tier 3 cities, Lucknow should be in the top 3, in my opinion. It's a state capital, proximity to Delhi, the national capital, and like Avasthi sir said, 4 hours of drive, it's not easy. Even Gurgaon sometimes on a wrong day takes 4 hours to go to Delhi, with a little bit of jest, to be honest, on the wrong day. But 2 hours is on an average it takes for us to go from Gurgaon to Delhi. So a little more, you are there. It takes us longer to go to Chandigarh, though it's only 250 kilometers. So I think proximity to Delhi, the population has got a minimum size or threshold of about 45 lakhs population, a great governance model, proximity to corridors like Ayodhya next door, these 6-7 cities nearby, a lot of catchment area which we do, Sushil and when we sit, we see demand coming from smaller towns. The attraction of Lucknow to attract all the nearby cities like Raebareli, or for that matter Sultanpur, or whatever these, there are about 7 smaller 10 lakh, 15 lakhs, 20 lakhs population cities all around Lucknow. It's acting as a magnet, and that is going to continue for a long time. So I think there are lots of organic
natural advantages which Lucknow has, which will keep it in good state. Viraj ji, Lucknow has always been an end user market. If you look at it, most of the housing demand comes from the actual users. And in some of the markets, investors are also very, very active, like, markets like Gurgaon or Noida. Do you think the mix of both investors and end users are important for a balancing act, especially when the developers are launching the project? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये मिक्स इम्पॉर्टेंट है, और ख़ासकर जिस तरीके से आज लखनऊ में जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रही है, जैसे कि मैंने बोला कि आज मेडिकल और एजुकेशन में लखनऊ एक हब बनते जा रहा है, तो उससे एक बहुत बड़ी स्टूडेंट हाउसिंग एंड एक बहुत बड़ी हाउसिंग फॉर मेडिकल वर्कर्स एंड मेडिकल पेशेंट्स की जो फैमिलीज़ होती हैं उनके लिए भी यहाँ पे बन रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेंटल काफ़ी अच्छा जा सकता है उन पॉकेट्स में जहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं या अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। साथ ही लखनऊ ट्रेडिशनली, जैसे आपने कहा कि एक एंड यूज़र ड्रिवन मार्केट रहा है, बट अब उस एंड यूज़र ड्रिवन मार्केट में भी क्योंकि आप बाहर से काफ़ी नए प्रोफेशनल्स यहाँ पे लगातार काम करने आ रहे हैं, काफ़ी फैकल्टी आ रही है, डॉक्टर्स आ रहे हैं, साथ में यंग प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, जब कोई अच्छी इकोसिस्टम बनती है तो उसके साथ उसकी सराउंडिंग इकोसिस्टम भी बनती है। जैसे लखनऊ में आज आप देखेंगे बहुत सारे रिटेल हब्स डेवलप हो गए हैं, लखनऊ में आज एंटरटेनमेंट के लिए, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे एक आना स्पोर्ट्स सिटी है जहाँ पे लगातार इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, हमारी खुद की BBD बैडमिंटन अकेडमी है जहाँ पे लगातार इंटरनेशनल बैडमिंटन मैचेस हो रहे हैं, तो दो सेपरेट इंटरनेशनल अरीनाज मौजूद हैं, तो इसकी वजह से लॉट ऑफ फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी आ रही है लखनऊ, जिनको अच्छी रेंटल कुछ सालों के लिए रेंटल चाहिए। साथ ही गवर्नमेंट के काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसके लिए हम देखते हैं कि बाहर से काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स यहाँ पे स्मॉल ड्यूरेशन के लिए काम करने आ रहे हैं, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, जिसकी वजह से अभी लखनऊ में हमने काफ़ी राइज देखा है सर्विस अपार्टमेंट्स में, काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सर्विस अपार्टमेंट्स के। तो आई थिंक लखनऊ एज एन इन्वेस्टर मार्केट आने वाले समय में बहुत अच्छा एक इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी बनने वाला है, और जिस तरीके से यहाँ पे ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो रहा है, आई थिंक आफ्टर मेट्रोज लखनऊ के Tier 2 में इज द बेस्ट सिटी, नॉट अमंग्स द टॉप 3, बट आई वुड से पर्सनली फील की बेस्ट सिटी है। जी, मेरा क्वेश्चन आप तीनों के लिए है, इफ यू हैड टू गिव वन एडवाइस टू द एनी न्यू कमिंग डेवलपर्स who are entering the Lucknow city or the UP city, I would say, what advice you would give? I think do the right thing. Don't enter for the sake of entering. Don't consider real estate as an attractive sector to jump into in order to make some money. Do for the right reasons. Have a higher goal than economics. Okay, so do it for the right reason. Maybe a contribution to the society. Right. Sorry? Do it right. Yes, do for the right reasons and do it right. Don't adopt shortcuts. Viraj? मैं खुद एक यंग एंटरप्रेन्योर हूँ, तो एज अ यंग एंटरप्रेन्योर मैं कहूँगा कि अगर कोई भी रियल एस्टेट में आना चाहता है उसको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि वो किस टाइप का प्रोजेक्ट, मार्केट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हमें लगता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है या पर्टिकुलर लोकेशन है तो दूसरे लोग कर रहे हैं, और जस्ट बिकॉज हमारी कोई पुरानी ज़मीन पड़ी है या हम जानते हैं जिसकी ज़मीन है तो हम भी वहाँ पे भेड़ चाल में डेवलपमेंट शुरू कर दें। रादर देन दैट आई थिंक इट इज़ वेरी important that we research the market, study what kind of clientele is coming, लोगों को जो हमारा बायर है उसकी इवेंचुअल नीड क्या है, तभी हमें उसमें उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे सर ने कहा कि आपको पूरी प्लानिंग करके ही प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। बहुत बार ये होता है, अक्सर होता है कि हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं, फिर हम रियलाइज़ करते हैं कि नहीं जी मार्केट की डिमांड ही कुछ और है। तो उसके लिए एज अ यंग एंटरप्रेन्योर, यंग डेवलपर, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिसर्च द मार्केट, स्टडी द मार्केट एंड देन ओनली जंप इन। वेरी गुड पॉइंट। राजू जी? मेरा मैं एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ आपको कि मैंने 2012 से लेके 13 से लेके और 16 तक की मंदी भी देखी है, फिर 16 में डीमोनेटाइजेशन का टाइम भी देखा है, और उसके बाद जो
जीएसटी की वजह से जो मंदी आई वो भी देखा, और जो माल हमने बेचा 5,000 रुपये फुट में 2012 में, और उसी माल को हमने 2019 में 4,000 रुपये भी बेचा। तो कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ उन नए डेवलपर के लिए कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। आप जब एंटर करो तो सबसे पहले फिजिबिलिटी उसकी बनानी होती है। तो हम फिजिबिलिटी बनाते हैं कि इस प्रोजेक्ट को मैं 3 इयर्स में कंप्लीट कर लूँगा। रेरा परमिशन देता है कि आपको 3 साल या 4 साल का टाइम आपको दिया, और आपने वो फिजिबिलिटी बनाई कि ये प्रोजेक्ट मैं 3 साल में पूरा कर लूँगा, तो तब तक तो ठीक है, आपके कागज़ में वो प्रॉफिट दिख गया आपको। लेकिन वही प्रोजेक्ट अगर इसी 3 साल में कोई भी सरकमस्टांसेस ऐसा आ जाए, जैसे अभी आया हुआ है, अभी पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट का सिनेरियो अभी स्लजिश है, लोग बाई करने में थोड़ा डर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है। तो उस सिचुएशन के लिए अपने फाइनेंशियल नीड का ध्यान में रखते हुए कि मेरा यदि माल बिकता नहीं है मार्केट में तो मेरा कंस्ट्रक्शन बंद ना हो, उसका बैकअप कहाँ से होगा, वो उसकी तैयारी करे। और प्लस यदि 3 साल में नहीं बना पाया वो और उसको जाके 5 साल में बनाता है, तो जो उसके बुक्स में प्रॉफिट है वो तो जाएगा ही जाएगा, और उसके ऊपर अब चूंकि रेरा आ गया उसकी पेनल्टी इतनी कैलकुलेट होती है कि हमने खुद ने दी है कि एक प्रोजेक्ट में हमारे साथ ऐसा हुआ जब स्टक था वो प्रोजेक्ट, कि जो पोजीशन पे पैसा मुझे लेना है बायर से, उल्टा हमें उनको देना पड़ा। हम लोग ऐसे डेवलपर हैं कि हम लोगों ने एज पर रेरा पेनल्टी दी, और जो इंटरेस्ट है वो हमने 24 नहीं लिया किसी से भी, बहुत कम लोगों से लिया और मैक्सिमम लोगों का माफ़ किया, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन लिटिगेशन में विश्वास नहीं रखता। हमारा रेरा में बहुत नेग्लिजिबल केस है, हम लोग अपने टेबल पे ही केस को ख़त्म करते हैं। तो अब वो समय चला गया कि आपने कमिट कुछ किया, दे कुछ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो कमिट किया है, जो लिखा है, वो आपको देना ही होगा। क्योंकि बायर अब आज की डेट में वो बायर नहीं है जो 2010 में था, जो 2009 में था या 2002 में था, लेकिन आज का बायर बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और वो उसको नॉलेज है। क्यों नॉलेज है? क्योंकि डिजिटलाइज हो गया, सब कुछ है आपके रेरा के साइट पे है, सब कुछ है, और आपने उसको लिख के दिया है, तो जो लिख के दिया है वो आपको देना ही है। तो ये सारा ध्यान में रखते हुए ये बहुत ऐसा ना सोचें कि वो ज़माना है कि बिल्डर आज 200 करोड़ लगा के 500 करोड़ कमा रहा है, वो ज़माना नहीं है, वो चला गया। तो वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए और ज़्यादा लीगल फ्रेमवर्क के अंदर काम करना पड़ता है, एनवायरनमेंट का के अंदर भी काम करना पड़ता है। आप जितने भी काम कर रहे हो बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, एनवायरनमेंट को आपको ध्यान में रखना होता है, कंस्ट्रक्शन में ग्रैब का भी ध्यान में रखना होता है, उसमें बहुत मेजर पेनल्टी होती है, पोल्यूशन का भी ध्यान में रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब वो फ्रेमवर्क नहीं रहा जो पहले था, अब उसको पूरा अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ आपको काम करना है, और इस जो आप कमिट कर रहे हो ट्रांसपेरेंटली आपको वो देना है। तो राजीव ये बोल रहे हो कि एक तो फिजिबिलिटी होना चाहिए, सेकेंडली आप कह रहे हो फाइनेंशियल क्लोजर होना चाहिए, थर्डली आप जो है डिलीवरी के ऊपर जो आपका कमिटमेंट है वो पूरी के पूरी कमिटमेंट रहना चाहिए। फाइनल क्वेश्चन टू ऑल द 3 पैनलिस्ट, one city in UP that will surprise India in the next decade. कोई भी ऐसा सिटी है जो यूपी में जो कि एक आपको सरप्राइज लगता है जो एमर्ज करेगी? मतलब ये लखनऊ के अलावा? लखनऊ के अलावा आई थिंक अयोध्या में काफ़ी पोटेंशियल है, जिस तरीके से गवर्नमेंट का अयोध्या पे पुश है।
वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया है, वहाँ पे वंदे भारत ट्रेन चलने लगी है। गवर्नमेंट वहाँ पे सोच रही है कि किस प्रकार से लखनऊ के अराउंड एक SCR रीजन को घोषित किया जाए, जिससे अयोध्या वेल कनेक्टेड हो जाएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से वहाँ पे नया अयोध्या की स्कीम आ रही है अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा, वहाँ पे मल्टीपल होटल्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अयोध्या सबको लग भी रहा है कि अयोध्या में बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी, बट उससे कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है अयोध्या में। जहाँ तक एक कल्चरल सेंटर बनने की बात है, आजकल हम राजस्थान में देखते हैं कि बहुत सारे वेडिंग डेस्टिनेशन सिटीज़ बन गई हैं। अयोध्या इटसेल्फ कैन बिकम अ वेडिंग डेस्टिनेशन सिटी। वहाँ पे वो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वहाँ पे अच्छे बड़े हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के होटल्स बन सकते हैं जो सिर्फ बैंक्वेटिंग और माइस सेगमेंट पे फोकस करें। साथ ही हम वहाँ पे लोगों के एक सेकंड होम के लिए भी इट इज़ अ ह्यूज सिटी, जहाँ पे आदमी सोच सकता है कि जब वो अपने 50-60s में हो तो वहाँ पे अयोध्या में कुछ काफ़ी लोग चाहते हैं कि वो जाके एक ऐसे कल्चरल हेरिटेज और रिलीजियस सिटी में टाइम स्पेंड करे। तो इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल इन ऑल स्पेयर्स, आई बिलीव। Rajesh ji, apart from Noida and Lucknow. Noida and Lucknow. I think Ayodhya will be the. आप भी वही कह रहे हो। And Kalyan? I would have loved to say Ayodhya, but since two of them have said, let me talk about the hope I have, as opposed to what the reality is, we do not know. I would love it to be Varanasi, because it's 1,000-year-old or one of the oldest cities in the whole world. It has got civilization which is very rich. It has got history which is very rich. It has got extreme strong connects to religiosity and spiritualism. It has given some terrific people to the country, starting from freedom struggle or before and after. I have had my own relatives who have decided to retire in Varanasi, coming all the way from Odisha, and they have stayed there till they died. So there is a very strong linkage emotionally for Indians with Varanasi. And with the Prime Minister being the MP from Varanasi, third time in the running, and hopefully longer, with the temple corridor which got done, I don't remember, 4-5 years ago I think it got done, with Ganga which is not going to change its direction and hence will flow by that, with the river navigation system and all of that stuff, and again a relative proximity to Delhi, but what about an hour and a half by flight. I would love to see Varanasi to be that city. Very good. Anybody has got any question for the panelists, please? मैं एक तो कहना चाहूँगा कि रिसोर्ट की जैसे कल्याण जी ने कहा और थोड़ा गीता का भी उन्होंने उदाहरण दिया, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग को थोड़ा एथिकल होना पड़ेगा बिल्डर्स को, जो मैं पाता हूँ कि कम है मोस्टली, मतलब लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, मोस्ट ऑफ अस आर देयर फॉर द मनी, फॉर अर्निंग, और इसमें मैंने देखा बहुत से बड़े बड़े बिल्डर्स भी हैं जो अपने कमिटमेंट को ऑनर नहीं करते। और उसमें क्या है कि जैसे हमने कोई जगह खरीदी और उसको 3 इयर्स में देना है, लेकिन उन्होंने उसको कर दिया 5 साल 5.5 साल हो गए, और जब हमने उनसे कहा कि भाई आप हमें पोजीशन दीजिए, और जो सवाल है आपका सवाल, हाँ सवाल वही बता रहा हूँ, तो हमने उनसे कहा कि भाई अब नहीं, मतलब इसमें देखिए हम लोग आपस के ही लोग बैठे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको डिस्कस करनी चाहिए और जिसमें क्लैरिटी लानी चाहिए। तो मैं नाम नहीं लूँगा किसी बिल्डर का, तो उन्होंने जब उनसे कहा गया कि भाई आप पोजीशन दीजिए, उन्होंने कहा भाई पोजीशन हम तब देंगे जब आप लिख के दे दोगे कि कोई हम डिमांड नहीं करेंगे जो देरी के जो इंटरेस्ट वगैरह, जैसे राजीव और सोपा जी ने कहा कि इन्होंने दिया लेकिन कई बिल्डर नहीं देते हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए अगर वो नहीं दे रहा है, और किस तरह से हमें डील करना चाहिए? इसके लिए तो रेरा सफिशिएंट है। नहीं, फिर आप देखिए लीगल में फंस जाते हैं, जो आपकी जगह का रिटर्न आना है या रेंट वगैरह मिलना है वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तब तक पोजेशन लेटर ही नहीं देगा, पोजेशन ही नहीं देता जगह। जिस बिल्डर को यदि ट्रांसपेरेंसी नहीं रखनी है जी जी, और वो इस बात पे अड़ा हुआ है कि आप पहले लिख के दे दो जी जी, तो वहां तो फिर अराइज हो गया ना डिस्प्यूट, तो डिस्प्यूट अराइज आपके पास हुआ, तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है रेरा, और रेरा बहुत कम समय में आपको निर्णय देता है
और रेरा में जाने का खर्चा भी बहुत कम है। यू कैन गो योर ओन, आप अपना लिख आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो और खुद लड़ सकते हो अपना केस। तो रेरा के अलावा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट दे, क्योंकि जिसको नहीं देना है वो तो नहीं देने पर अड़ा हुआ है। तो डिस्प्यूट खत्म कहाँ हुआ? डिस्प्यूट तो तब खत्म होगा जब वो देने तैयार हो गया, क्योंकि आपका बनता है। 5.5 साल हो गया, 3 साल का कमिटमेंट किया, 1.5 साल का पेनल्टी बनता है आपका, और आपको देना बनता है कि यदि आपने पेमेंट लेट दिया है तो वो उतने ही रेट से वो लेना बनता है। अगर वो उनको देते हो तो आप मांगने के हकदार हो, अगर आप वो उनको नहीं दे रहे हो, पेनल्टी मांग रहे हो, तब भी डिस्प्यूट है। तो इसका एक ही उपाय है, और आज की डेट में बहुत कम ऐसे बिल्डर होंगे जो रेरा में जाने के बाद, अब इतने दिनों बाद, यानी 17 में रेरा आया और अब बहुत एजुकेट हो चुके हैं बिल्डर, और उनको पता है और वो प्रोविजन करके चलते हैं पेनल्टी का बैलेंस शीट में। ठीक है कि इतनी, और उनके ऑडिटर उसका प्रोविजन कराते हैं कि आपको इतनी पेनल्टी हो गई अब तक। तो कोई अब रेयर होगा, कहीं अब छोटी जगह होगा तो आई कांट, वो मैं आपसे अलग से डिस्कस कर लूंगा। हाँ, लेकिन आपका सॉल्यूशन सिर्फ रेरा के पास है। So anyone else? Hello, my name is Brijesh Pandey. I was just seeing that Mr. Viras Sagardas and Mr. Rajiv Asolapa, Mr. Kalyan Chakravarti, they have very well said that next emerging city is going to be the Ayodhya and Varanasi. I think just attack the mind of that next city is going to be Mathura also, and the big thing is coming in near future, next 5 years, that is the senior living. Mr. Viras Sagardas well said that is now the Lucknow is coming as a service apartments and other things, but another in next 5 years that the senior living is also demand of the country. Thank you so much. Good, thank you. Good, I think from the entire discussion from the morning, I think very interesting panel we had. What clearly emerged today is the Uttar Pradesh is no longer a big housing market. It is a big transformational urban growth story. बहुत बड़ा एक growth उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है, because all the speakers mentioned about the emerging cities, being it is अयोध्या हो, वाराणसी हो, चाहे आपका गोरखपुर हो, वैसे छोटे छोटे सिटीज जो एमर्ज, जैसे मथुरा है आपने बोला, वैसे डिफरेंट एसेट्स क्लास भी जो है एमर्ज कर रही है। जैसे अवस्थी साहब ने बोला मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, डाटा सेंटर्स के ऊपर, सीनियर लिविंग के ऊपर, और चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। सो देयर इज ए urban growth story which is happening in UP, and we are rightly poised to become one of the largest economy among all the states, and also मेरे ख्याल से जो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो सपना है हमारी उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर की by 2030, आई थिंक वो फुलफिल करने के लिए, आई थिंक इफ द गवर्नमेंट रिमेन स्टेबल, I do feel that the achievement of that $1 trillion economy will be possible. So thank you so much to all the panelists. Very interesting, very interesting exchange of ideas and thoughts. Thank you so much for each one of you for your sharing your insights on various subjects. Thank you so much. Please stay back, sir. We are waiting for Mr. Anuj Puri ji to felicitate our eminent speakers, panelists. बस 2 मिनट के लिए।